Okay, next question. In trapezium ABCD, AB is parallel to DC and ये इधर 90 डिग्री है, ये इधर 90 डिग्री. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव डन. फ्रॉम हियर they have drawn again a perpendicular, and from here also they have drawn a perpendicular. DM perpendicular to AB and CN perpendicular to AB. तो ये इधर भी ये 90 डिग्री है and this is also 90 degree. Now in triangle ABD, okay, 25 square is 15 square plus BD square. देखो this square is equal to this square plus this square. Okay, so AB square is 15 square plus BD square. Solve किया, you will get BD to be 20. Now area of triangle ADB is half into ADC. If this is the base and this is the height, half into AD into BD. So half into AD into BD, that is half into 15 into 20. So you get solve and you get 150. अभी इसी ट्रायंगल का हम इसको बेस पकड़ेंगे और इसको हाइट पकड़ेंगे. समझ में आ रहा है? द सेम ट्रायंगल वी गेट कंसिडर दिस एज द बेस एंड दिस एज द हाइट. अभी इसी ट्रायंगल का हम इसको बेस पकड़ेंगे और इसको हाइट पकड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखो, half into AB into DM, half into AB into DM. We know area of ABD is 150, half into 25 into DM. तो therefore ये अपने को मिला 300 ऐसा. therefore 300 upon 25 is DM. तो अपने को DM मिला 12. Similarly we will find out CN. कैसे similarly find out करेंगे? We will find out AC square plus CB square equal to ये ऐसा सॉल्व करेंगे हम लोग. इसको सेम मिलने वाला है तुमको 12, बिकॉज दिस इज 15 एंड दिस इज ऑल्सो 15. तो तुमको ये मिल गया DM और CN दोनों भी तुमको मिल गया 12. नाउ इन ट्रायंगल MNCD, सॉरी इन क्वाड्रिलेटरल MNCD, it is a rectangle. Okay, so AM equal to X, BN equal to X. So if AM equal to X, this will be also equal to X, correct? Therefore MN is equal to MN. ये कितना है? ये 25 नहीं है. This whole thing is 25. Okay, MN will be 25 minus 2X. So let's write it like this, 25 minus 2X. और ये पूरा 25 है, करेक्ट? ये पूरा 25, इतना पार्ट x लेंगे, इतना पार्ट x होगा. सो इट विल बिकम 25 माइनस 2x, करेक्ट? नाउ इन ट्रायंगल AMD, इन ट्रायंगल AMD ये x है, ये 15 है, DM हमको मालूम है 12. Okay, we will put all the values, you'll get x to be 9. Okay, now MN is what? 25 minus 2x, that is 25 minus 2 into 9. Solve करेंगे. CD equal to, sorry, MN equal to 7. If MN is 7, CD is also 7. Okay, now area of quadrilateral ABCD is what? Half into sum of the parallel sides into height. ये क्या है? trapezium. If you have learned the area formula for area of trapezium, it is half into sum of the parallel sides into height. इसको सॉल्व करेंगे तुमको ये मिल जाएगा. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. इन द फिगर PQR is an equilateral triangle. Point S is on QR such that QS equal to 1/3 QR. Prove that 9PS square equal to 7 PQ square. इसमें कुछ भी टफ नहीं है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. बस तुमको अच्छे से याद रखना है. एटलीस्ट 3 to 4 times these type of questions should be solved. Only then you will be able to solve them in the exam. This question is not expected in the unit test, but
it may come in the term exam or in the board exam and in the prelims of course. So ये 90 degree, QPT is 30 degree, therefore it is a 30, 60, 90, and PT is root 3 upon 2 times PQ. So PT is root 3 upon 2 times PQ अपने को मालूम है, and QT is half of PQ. QT will be half of PQ, side opposite to 30 degree. Now ST equal to QT minus QS. Please hold the figure in front of you while you are doing this. Unfortunately I am not able to do it. Okay, देखो ST is QT minus QS. ST is QT minus QS, isn't it? Now we will put the values of QT and QS. So QT is what, half of PQ, and QS is what, 1/3 of QR. This is given to you. इसको सॉल्व करेंगे LCM लेके, 3PQ minus 2QR. Okay, wait, before that QR can be written as PQ because it is an equilateral triangle. तो इधर लिख दिया ये. So you get half PQ minus 1/3 PQ. तो इधर जाएगा 3, इधर जाएगा 2, इसका LCM लेंगे तो ये होगा 3PQ minus 2PQ upon 6, that is PQ upon 6. Now we got ST as PQ upon 6. Now in triangle PTS, PS square is PT square plus ST square. PS square is PT. PT is what, root 3 upon 2 times PQ. पीछे find out किया square. ST is what, PQ upon 6 the whole square. That is equal to, ये क्या आएगा 3PQ square upon 4, और ये क्या आएगा PQ square upon 36. Therefore PS square is equal to, इसका LCM लिया 4 और 36 का, you multiply this by 9. So here also you have to multiply by 9. So you get 27 PQ square plus PQ square upon 36. इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 28 PQ square upon 36. Okay, ये कट हो जाएगा 4 से, you get 7 PQ upon PQ square upon 9. The 9 will go the other side, you get 9 PS square equal to 7 PQ square. Okay, these two last questions, क्वेश्चन 17 बहुत इजी है, डायरेक्ट तुमको इसमें अपोलोनियस लगाने हैं दोनों में भी. ओके, ओनली द थिंग इन दिस थिंग इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज टफ हियर. 676. सो प्लीज रिमेंबर द स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज 26. बहुत लोग सोचते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ तो गलत होगा, कुछ नहीं, बिकॉज जनरली वी डोंट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 26, वी डोंट रिमेंबर इट, and the factors are also very tough, तो तुमको टफ जाएगा. तो प्लीज रिमेंबर स्क्वायर रूट ऑफ 676 will become 26. That's all. Thank you friends.